My warmest greetings to all the viewers. It gives me a very deep sense of, satisfaction, gratification, uh, wonderful feeling to present Vijay ji to the viewers. He's presently about 64 years old. He's an ex-serviceman retired from Jack Rifles. Way back, 25 years back. And thereafter, he's been in security jobs and presently leading a retired life with his family. That's Avinash. He runs a garage. Prashant, he also runs a garage. Uh, well, you see, he came to us 3 years back with a very advanced cancer of his tongue. Very advanced cancer. We labeled it as T4A as per our TNM classification. The PET scan showed that the neck was more or less negative. So we staged it as T4A N0. Well, so it's a locally advanced tongue cancer. We decided that let's first give him some chemotherapy, reduce the bulk a little. Extrinsic muscles were involved. The tongue was absolutely riveted to the floor, so it was ankyloglossia. So gave him 2 cycles of chemo. Thereafter, the response was fairly good. It was labeled as partial response. That means more than 50% reduction of the tumor. And we took him out for surgery. We did a wide local excision of the tongue and a neck dissection. The floor had opened through and through. Between the floor and the mouth, there was connection. So what we decided to do at that time, something unusual, which I share with my, oncosurgery colleagues. We did what's I call it a silo-adenopexy. Then I preserved his submandibular gland, and I used the submandibular gland to bridge the gap between the oral cavity and the neck, rather than taking recourse to a free flap. So he did well. He was discharged from the hospital on the fourth day, and we generally tongue resections. We generally advise them to stay close by and not go like they are from Jammu. I did not allow them to go to Jammu. So, eighth post-operative day, very rare it happens, extremely rare. I think I can count on fingers if ever this kind of a happening has happened. Eighth post-operative day, and it was 6 o'clock in the evenings. I got a call that he's being rushed to the hospital, and he is profusely bleeding in his mouth. So when the bleeding in the mouth happens, number one, a patient can bleed to death. Number two, the bleeding can go and choke him. Sometimes, the patient is lying down, the bleeding can go into the lungs, and then the cardiac arrest happens. So the first thing which one should do is to sit up and spit it rather than allow it to go into the lungs. So, God was kind. He was sitting and they rushed him to the hospital. I was also about 3-4 kilometers away from the hospital, and I also rushed to the hospital. He was wheeled straight away into the OT. And what we did was open the neck back again and ligate his external carotid artery. And that's all. Uh, he did not lose more than a unit or two of blood, and actually, no blood transfusions are required. He was kept on a ventilator overnight, and he recovered well. In another 3-4 days, we could back again discharge him. He healed very well. In a month's time, he was ready for his adjuvant therapy, concurrent chemo radiation, because it was even after the chemotherapy, he was, as we label it, as YPT3N1. So even after chemotherapy, it was still an advanced stage. So we give him chemo and radiation. Now it's been 3 years over. He is asymptomatic. He is fine. He has no problems. विजय जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या एक्सपीरियंस था आपका और ये दिन कैसे फर्स्ट क्लास निकले हैं? कोई तकलीफ है आपको? अभी मेरे को कोई तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। कोई आप प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं। लाइफ लीड सिर्फ करते हैं। खाने प्रॉब्लम है, दांत की। दांत नहीं है, वो तो दांत नहीं है तो हाँ। इस बीमारी के साथ ताल्लुक ना नहीं है। कोई प्रॉब्लम, कोई बाकी नहीं, कोई प्रॉब्लम मगर नहीं आप है। दांत लगवाना चाहें तो लगवा भी सकते हैं। हाँ, दांत लगवाना है। लगवा सकते हैं, हम लगवा देते हैं। हाँ, दांत हम लगवा लगवा के देंगे, दांत लगाने में कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। अविनाश, आप बताइए, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? एंड भगवान की बहुत कृपा है। बहुत देखिए, कृपा है, बहुत हम कृपा। नहीं सबको बचा सकते, हाँ, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कृपा है। नहीं, हम तो जो करना चाहिए वो कर सकते हैं, कृपा भगवान वो की हमने है। कर दिया।
उसके बाद रिजल्ट क्या होगा, इसीलिए तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं व्यूअर्स को बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। तो कृपा है ना, कि इतनी एडवांस्ड बीमारी थी, हाँ, उसके बावजूद जो कुछ करना चाहिए था इंटरनेशनली वही किया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारी दुनिया में यही किया जाएगा। यही हो जाता ठीक है। है, सर्जरी की थोड़ी स्किल्स और मैच्योरिटी हमारी बढ़ती जाती है हाँ, जैसे जैसे साल निकलते जाते हैं। मुझे बिल्कुल सर, 40 साल बिल्कुल। हो गए हैं ये करते हुए। सर्जिकल स्किल्स तो इम्प्रूव हो जाती हैं, बट फिर भी रिजल्ट कभी भी हमारे हाथ में नहीं, कभी भी नहीं। नाम तो ठीक। सब आपको ही आता है ना। सर वो हरे कहते हैं ना, राम, जो किसी ने जो भगवान भी नहीं है। देखा, लेकिन हरे किस रूप में कृष्णा, कभी आ जाए, हरे कृष्णा, जैसे यस कि आपके यस। रूप। तो हम आप में भगवान देखते हैं, आप हम में देखते हैं। बिल्कुल, हमारे पास भगवान तो तो सब है, जगह है। तो जहाँ तक पहुँचे हम, मेरे को मेल नहीं सुनी। बस हमने दिल से किया जो कुछ भी किया, बिल्कुल, बिल्कुल। और कृपा है भगवान की कि आप हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। बड़ा अनयूजुअल सा सब कुछ हुआ, इसलिए मैं प्रेजेंट कर रहा हाँ, हूँ आपको, बिल्कुल कि सर। सब लोगों को उनकी जानकारी के लिए, हाँ, और फाइनली ग्रैटिट्यूड के लिए कि हर बिल्कुल एक सर, बिल्कुल, आदमी, हर एक बिल्कुल। डॉक्टर के हाथ में ये ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं, बिल्कुल नहीं। सो आई एम वेरी हैप्पी। आपको कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा सा रेडिएशन के बाद थायराइड की कमी हो जाया करती है, वो हाँ, भी नहीं हुई है आपको। नहीं, मैं वो सर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत मैं ज़्यादा सर काम दर्द करते का, हैं, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ, दर्द का हमसे पूरा ज़्यादा काम काम करता हूँ। खेती का काम किया मेरे को, खेती बाड़ी में पूरा वंडरफुल। काम किया उसको। आपके हाथ कोई बताते हैं कि थकावट, कोई जान कितने। लगाया, थकावट नहीं, हमसे जान ज़्यादा लगाया काम मैंने करते दो के लिए, हैं, पूरे 10 गुना ज़्यादा काम करते तस्वीर का काम किया मैंने, बिल्कुल कोई खराबी नहीं मेरे को। वेरी गुड, हाँ। वेरी हैप्पी। थैंक यू माय डियर।